वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं जनाब? ठीक है सारे? एनी फीडबैक अबाउट मिड टर्म? अच्छा हो गया सर। बहुत आसान बनाया था मैंने। आई मीन इससे ज्यादा आसान हो नहीं सकता था। जी सर। Okay, so we will start our today's lecture. It is lecture 13 probably. So it's about vortex flow and flow over notches. So first part of today's lecture, Bismillahirrahmanirrahim, Amma Baad. So the first part of the vortex of this lecture is related to the vortex flow, for which we will study only its introduction. So we will not go into details like numericals, etc. But we will focus on flow over notches. Okay. So one by one, I would explain that what are these two terminologies, vortex and notches. Any one of you have heard about the term vortex? What do you mean by vortex? कभी vortex का नाम सुना है? So it's basically a swirling motion, just like any swirls. So, have you ever seen circular moving fluid? यस सर, यस सर। कहाँ पे देखा है? Any example? सर शैंक में जब पानी जब नीचे जाता है सर, तब भी वो सर किसमें पानी नीचे जाता है? सिंक में। सर सिंक पानी में। सर पानी में अगर आप पत्थर फेंके तो फिर वो भी सर सर्कुलर वे में मूव करता है। Very good. Yeah, and there are so many examples related to vortex flow. However, in terms of fluid dynamics, as fluid dynamics covers fluids other than water as well. So a vortex is a region within a fluid where the flow is mostly a spinning motion. Okay. About an imaginary axis. So we cannot see its axis, but we still see that the fluid is in a moving state or in a say spinning state. It can be straight or curved. So that motion pattern is called a vertical flow. Okay. So some common examples are smoke rings, the whirlpool often seen around the boards and paddles. So as I mean, it is just like the same as one of you have mentioned the example of throwing a stone in a still water and observing some circular waves. So at the downstream of some boards or paddles, so you will also observe these sort of phenomena. And the wind surrounding hurricanes, tornadoes, and dust devils, etc. Okay, so and in another way, just like if you just stir the cup of a tea, you will see that the fluid is in moving state and there is slight depression towards the center. I mean, if you see its cross section, so if initially the fluid level is somewhat here, when you just spinning the fluid in a cup, you will observe that after some time, the liquid will glide on its sides, and there is a depression created at the center of it. So if you stir this fluid more vigorously, then there would be a depression created at its center, just like
in this figure. So if we take a cylindrical vessel containing some liquid and start rotating it about its vertical axis, we see that the liquid will also start revolving around along with the vessel. After some time, we shall see that the liquid surface no longer remains level, but it has been depressed down at the axis of its rotation and has risen up near the walls of the vessel on all sides. So this type of a flow in which a liquid flows continuously round a curved path about a fixed axis of rotation is called the vortex flow. I hope the basic understanding is clear to you. So in terms of hydraulics, so there is uh, I mean, what are the drawbacks of these vertical flow in, say, in a river? So one example is bridge pier covering. Okay, this is the pier of a bridge. Say if you have some bridge on it, and the water is flowing in it in this state. This is the river bed. Okay, so river bed means there would be a mixture of sand, clay, gravels, boulders, etc. So due to this vertical flow, so these are the vortices. Now there are two types of vortices in this flow phenomena. One is the wake vortex, which is in a fluid, I mean, which is in a fluid direction, in a moving straight direction, and the other one is the horseshoe vortex, which is just like created at the bottom of this bridge pier. So due to these vortices, it it creates certain force on bed material to remove from its original position. So this phenomena we call it as a scouring. Okay, scouring. So the two important phenomena related to sediment transport in terms of fluid mechanics are scouring and erosion. Scouring and erosion. Okay. So erosion of a river banks and scouring of a bridge pier. Okay. So the two terminologies, the meaning of both the terms are more or less same, but these are a bit different. So we usually say that's covering around a bridge pier. Okay, so if we have covering around something, say if we have obstruction like this, then this the removal of soil, um, or you can say the bed material around any object, we call it as a covering. And um, whereas, say if some river is flowing and it has some river banks, in Urdu we call it as दरियाओं का कटाव. अक्सर आपने सुना होगा टर्म कि जी सैलाब आया और दरिया का कटाव शुरू हो गया. So that is basically the erosion of river banks. Okay. So this is one practical application of investigating these vortices because it has a direct relationship with the scouring and erosion. Okay. So still, if you, I mean, in future, if you have some research projects or something, then you can study these phenomena in detail. So now the two types of vortex flow are, the one is the force vortex flow and the other one is the free vortex flow. Force means that we are generating the vortices by applying some force. Just like this example. So we are applying some force uh, either from some, say, spoon or some automatic mechanism, or there can be some free vortices. Free vortices means just like the flow in a basin. If you just block the flow in a wash basin, then there would be a artificial pondage created. I mean, there will be an inundation in a river basin,
but as you remove the blockage, so the water will start flowing in a basin, and just at the very last moment it starts spinning around the the wash basin, and it creates some vortices. So that is an example of free vortex, that you are not applying a force, but due to the curvature of, or due to the shape of the water. So that is the free vortex. So force vortex, as I said that in the start, that it is a type of vortex flow in which the vessel containing liquid is forced to rotate about its fixed vertical axis with the help of a torque. So this is an external thing. If the applied torque is removed, the rotational motion will be slowly destroyed. Now consider a cylindrical vessel containing a liquid initially up to AA. So this is AA as shown in the figure. So when you just start rotating like this one, you see that it starts moving towards the sides. Let the vessel be rotated towards its vertical axis OO. It will be noticed that the liquid surface in a vessel no longer remains level, but it has depressed down at the axis of its rotation and has risen up near the wall of the vessel on all sides. If the vessel is revolved with the increased angular velocity, it will be noticed that the liquid has depressed down to a greater extent at its axis of rotation, and it risen up to a greater height near the walls of the vessel. So if you further increase the velocity of the rotation, the liquid will spill out of the vessel, and ultimately the axial depth of the liquid will become zero. Any question? Any question related to vortex flow? सर ये एक्सियल, सर ये लास्ट पॉइंट था सर, एक्सियल लेंथ बिकम जीरो, सर इसका क्या मतलब है? एक्सियल डेप्थ, एक्सियल डेप्थ मींस कि अगर आप बहुत फास्ट स्टीयरिंग करेंगे, यस सारा सर, पानी जो है वो बाहर साइड्स निकल में आएगा, कर देगा, ठीक यस है, सर, और बीच में एक डिप्रेशन डिप्रेशन, क्रिएट हो जाएगी, मींस ये एक्सियल फ्लो है, एक्सियल। तो एक्सियल डेप्थ से यहाँ जीरो हो जाएगी, तो पानी सारा हो सकता है, ओके ठीक ओके है। सर, ये सर यानी कि वापस अपने लेवल पे आ जाएगा? नहीं, एक्सियल मींस के, एक्सियल मींस सेंटर पॉइंट पे जो है वो डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा इस तरह। ये अब इसमें एक्सियल डेप्थ जीरो है, इस जगह पानी नहीं है ना, यस सर, तो इस जगह पे डेप्थ जीरो है। अब ये चीज देखो, ये एक्सियल है, ठीक है, ये एक्सियल एक्सिस है। ओके अब मैंने क्या किया, पानी और मैं तेज करूंगा तो ये कुछ टाइम बाद इधर आ जाएगा, ओके कुछ सर, टाइम बाद समझ इधर आएगा। आ जाएगा, कुछ टाइम बाद इधर आ जाएगा, जस्ट लाइक और फिर मूव करना शुरू कर देगा सिर्फ एक्सिस पे, बीच में पानी होगा ही नहीं, ओके सिर्फ सर, सॉरी साइड्स में मूव करना साइड्स शुरू। पे होगा, जी एक्सिस जी, पे नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू सर। you're welcome. So the free vortex is a type of flow in which the liquid particles describe circular paths about a fixed vertical axis without any external force acting on the particles. The common example of free vortex occurs when the water escapes through the hole in the bottom of the wash basin. Okay. So this is all about the vortex flow. So now we'll move towards the flow over notches. Have you heard about notch? यस सर, नॉच सर, जो छोटे छोटे निशान जो लगाते हैं निशानी के लिए, नॉचेस। क्या लगवाते हैं? सर किसी किसी भी चीज के ऊपर सर कोई छोटे कट लगा देते हैं ताकि उस निशानी के लिए उसकी एग्जाम्पल? नॉच। सर नॉचेस सर कश्तियों को भी कहते हैं मेरे ख्याल से, सर कंफर्म नहीं है मुझे। नॉच बेसिकली, आपने ये कल ही किसी स्टूडेंट ने एग्जांपल दी थी, कल नहीं बल्कि लास्ट ईयर, एक मोबाइल के अंदर भी नॉच
अब आ रही है। जी जी सर। इधर कैमरा बना होता है फ्रंट पे, कभी सुना है ऐसा? नो सर। यस सर। यस वाला ने कैसे, आई मीन ये क्या वाकई टर्मिनोलॉजी यूज होती है मोबाइल में इस तरह की? जी सर होती है। ओके, सो नॉच भी कुछ इसी तरह की होती है। आई मीन से अब say if we have a water flowing in a channel, say if it is 3D channel, हमने क्या किया फ्रंट पे, for measuring, the purpose is for measurement of discharge, हमने एक कुछ फ्रंट्स अगर मैं देखूं तो इस तरह का स्ट्रक्चर है। इट कैन बी रेक्टेंगल, इट कैन बी ट्राइंगल, it can be trapezoidal, etc. So the water will flow from this side. Okay, so by measuring the depth, say h, by measuring the depth, we will find the discharge. Obviously, it has some relationship or formula. There is a formula of discharge Q in relation to h, which we will study in the later part of the lecture. So notch is basically the purpose of notch to measure the discharge in an open channel. Okay. A notch may be defined as an opening in one side of a tank or a reservoir, like a large orifice with an upstream liquid level below the top edge of the opening. In the previous lecture, you studied about the orifice. Orifice is a small hole through which the liquid flows out. But the important point is that the water level on the, I mean, in terms of orifice, the water level should be here so that the water rushes with some pressure. ऐसे ही है जी. If the Yes, water sir. level is reduced and it comes near the top surface of an orifice, just like here. Here. So there's no function or no purpose of the top surface. Agree करते हैं? Yes, sir. I mean, there's no function or no purpose. If अगर मैं इस सारे पार्ट को रिमूव भी कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इस तरह दिखेगा, ऐसा ही है, ठीक है? So now this becomes notch and all the water will flow from this side. Now the top surface is at the atmospheric pressure. I mean, the water coming out of it due to the atmospheric pressure and obviously due to the flow velocity from behind. Okay, say it's a river. So mostly in a small scale setup in an open channel, just like in laboratory, hydraulic flume. So we usually make a notch at the downstream side so that we can measure the discharge, that how much discharge is flowing in an open channel. So because it is a very important parameter for performing any experiment, discharge has a direct relationship to each of the parameter. In terms of I mean, there are so many factors regarding velocity, etc. Scouring has a relationship with discharge as well, etc., etc. The top edge or the notch above the liquid level serves no purpose. Therefore, a notch may have only the bottom sides and edge. The bottom edge over which the liquid flows is known as sill or crest of the notch, and the sheet of the liquid flowing over the notch or a weir is known as nape or vein. Okay, so जो bottom part है over which the liquid flows is basically the sill, and the water which flows over the sill is the nape or vein.
A notch is usually made of a metallic plate and is used to measure the discharge of liquids. Okay, so usually it is made of a metallic plate. Any question up till here? कोई क्वेश्चन किसी का? सर इसका मतलब सर ये है कि सर एक ही अगर होल है किसी भी वेसल में सर वो एक ही टाइम में सर नॉच भी है और ऑरिफिस भी बंद हो सकती है। नहीं, वो अगर तो देखो उसका जो ओपनिंग है, अगर तो उसका वाटर लेवल, इफ द वाटर इज फ्लोइंग फुल, ठीक है, यस सर। इस ओपनिंग में से सारा पानी पास कर रहा है, तो फिर ये ऑरिफिस है। ऑरिफिस है। यस ठीक है, सर। अगर इसका पानी के लेवल टॉप सरफेस से नीचे आ जाए तो फिर ये नॉच बन जाएगा। सर ये सर अगर पूरी फर्स्ट से बाहर निकलेगा सर अगर ऑरिफिस में तो वाटर लेवल तो कम हो जाता है सर, तो एक ही टाइम पे ऑरिफिस भी है और नॉच भी बन जाएगी फिर वो। देखिए, डिपेंड करता है ना, आप ऑरिफिस वाटर लेवल कम क्यों होगा? अगर तो पीछे से डिस्चार्ज आ रहा है, क्यू इज कॉन्टिन्यूअस, फिर नहीं होगा। तो फिर तो लेवल कम नहीं होगा ना। डिस्चार्ज ना हो सर फिर तो कम हो जाता है। और डिस्चार्ज देखो, हम एक्चुअली इसको डिस्चार्ज मेजर करने के लिए कर रहे हैं ना, तो ओके मींस सर। के द वाटर इज फ्लोइंग इन अ फ्लोइंग स्टेट, तो अगर वो तो फिर आखिरी टाइम पे होगा जब सारा डिस्चार्ज खत्म हो गया और पानी आहिस्ता आहिस्ता नीचे, फिर तो जीरो हो जाएगा, फिर तो यस सर। उस ओरिफिस में से भी लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। यस सर। For this, the I mean the head should be maintained. I mean अगर आपने discharge measure करना है in terms of orifice as well, the head of water should be maintained. नहीं तो वो discharge change होता रहेगा, fluctuate होता रहेगा। यस सर। ठीक हो गया? अब एक दरिया बह रहा है ना, एक दरिया बह रहा है, अब उसमें से अगर आप कहीं जगह नॉच लगा दें या ओरिफिस लगा दें, तो जो पानी से 10 बजे आपको ओरिफिस से बाहर आ रहा है, 11 बजे भी उतना ही पानी बाहर आएगा ना, अगर तो दरिया फ्लो कर रहा है, या नहीं होगा? होगा सर होगा। हाँ, सो हेड शुड बी मेंटेन्ड, द डिस्चार्ज। discharge, for measuring discharge means water in a flowing state. यस सर। Okay? So there are many types of notches depending upon the shapes, but the following are important from the subject point of view. So we would discuss one by one: rectangular notch, triangular notch, and trapezoidal notch. Okay. Step notch is basically, say, it's a combination of two notches like this. So this is basically a rectangular, two rectangular notch. One is this one, and the other is this one. So we can measure the water depth of both these rectangular notches in order to find the discharge. So first of all, rectangular notch. Consider a rectangular notch in one side of the tank over which the water is flowing as shown in figure. Uh, Here you can see that this is the sill and the water is flowing over it. This height of water has no purpose, so we will ignore this. So the only thing which we are going to measure is this height, h. Okay, so this is the height of water above this cell. So consider a unit strip. अब ये इसका क्रॉस सेक्शन है, अगर मैं इसको फ्रंट से देखूं, ये दिस इज द क्रॉस सेक्शन, अगर मैं फ्रंट से देखूं तो ये ऐसे नजर आएगी, पानी इधर है तो ये एच है। ठीक हो गया जी? और ये इसकी विड्थ है नॉच की, बी। मैंने क्या किया, इधर मैंने एक स्ट्रिप कंसिडर की, बिकॉज आई एम डिराइविंग अ फार्मूला। इधर मैंने एक स्ट्रिप कंसिडर की जो इस डायरेक्शन में है। ठीक हो गया जी? वो ये स्ट्रिप है। The thickness of this strip is delta H.
और DH, ठीक है जी, इस स्ट्रिप की थिकनेस। एंड द हाइट ऑफ वाटर अबव दिस स्ट्रिप, अब ये स्ट्रिप के ऊपर जितनी हाइट है वो क्या है जी, स्मॉल h। ओके, चार चीजें इसमें मैंने आपको बताई हैं। एक तो कैपिटल H विच इज द टोटल हाइट ऑफ वाटर अबव द नॉच। सेकंड इज B विच इज द विड्थ ऑफ नॉच विच विल रिमेन कांस्टेंट, ओके, ये चेंज नहीं होगी। DH which is the strip we have considered at any height in the water depth। ये स्ट्रिप इधर भी हो सकती है, इससे नीचे भी हो सकती है, इससे ऊपर भी हो सकती है, जबकि स्ट्रिप की हाइट थिकनेस क्या है जी, DH है। जो स्ट्रिप हमने कंसिडर की उससे ऊपर पानी की जो भी डेप्थ है वो स्मॉल h है। ठीक हो गया जी? एनी कंफ्यूजन इन दिस फिगर? Okay, so let h be the height of water above sill of the notch, B be the width or length of the notch, CD is the coefficient of discharge। कोफिशिएंट का आपको पता है, लास्ट टाइम हमने इसमें डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी हमारी हुई है, that what is the coefficient। Let us consider a horizontal strip of water of thickness dh at a depth of h from the water level as shown in the previous figure, this one। Area of the strip is BDH, ठीक है जी, क्योंकि width constant है। अगर मैंने ये एरिया निकालना है, this times multiply by this DH, it gives an area। And theoretical velocity, we know that in just like in a pitter tube, we measure that the velocity is, if this is h, which is the height of water above the measuring point। So theoretical velocity हमने last time देखी थी 2g h under root। And what is h here? The height of water above that point at which we are measuring the velocity। Okay, so we are measuring the velocity in this strip dh, so the small h is the height of water above this thickness। Say if this is the small strip, so the height of water above this h, and this thickness is dh। So this is theoretical velocity। So what is the formula of discharge? कौन बताएगा? Q is equal to AV और साथ CD से मल्टीप्लाई कर दें अगर हम कोफिशिएंट, तो दिस बिकम्स एन एक्चुअल डिस्चार्ज। So discharge through the strip, small dq would be CD, area of strip, and theoretical velocity। So now, so this is the discharge which is flowing in a small strip। Now we are going to transfer this discharge to overall height h, just like this one। हमने इस स्ट्रिप में डिस्चार्ज फाइंड कर लिया है, अब हम चाह रहे हैं कि इस पूरे एरिया में इसको ट्रांसफर कर दें, तो नाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस। Integrate from 0 to h, the limits of integration of from 0 to h, 0 is the I mean boundary condition at this cell, so this is cell, and h is the height of water above this cell। So you just take the integration and after solving the integration, and it's very easy, so you have the final formula for Q for a rectangular channel, okay, for rectangular notch basically। So 2 by 3 CD, B 2G, H 3 by 2। So here B is constant, CD will also constant for that particular notch, G is also constant, so the only thing which varies is H। So say if you have installed a notch in any of the flowing liquid, you just make some graduations here, okay, and from the top you see that what is the height h। So based on this value of height h, you will be able to find the discharge, okay। Sometimes
अब इस नोट में क्या लिखा है? Sometimes the limit of integration in the above equation are from h1 to h2. हमने इसको जीरो कंसिडर किया है, तो समटाइम्स क्या होता है, जीरो किसी जगह पे इसको हम ले लेते हैं और कह देते हैं भाई यहाँ से यहाँ तक से 5 फीट है और यहाँ तक से 8 फीट आ रहा है. सो द लिमिट्स are basically 5 and 8, or you can also write it as 8 minus 5 3, so 0 and 3 can also be the limits. Okay, so in that case, if you are taking datum over here 0, then you can transform this formula to h2 and h1 instead of only h. Okay, so an example to of this formula, very simple example: a rectangular notch of 0.5 meter wide has a constant head of 400 millimeter. So the width of the notch is 0.5, and the water which is flowing over this has a constant head. देखो यहाँ पे constant head आ गया. अभी जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था RFS में, so उसमें भी constant head होना चाहिए. So if the head is not constant, then you cannot measure discharge. So H is 400 millimeter. Okay, so find the discharge over the notch. If the coefficient of discharge of the notch is 0.62, B is given, H is given, CD is given, Q का formula में सारी चीजें put करें H. So can you find Q? Yes, sir. Okay. I hope it is clear to you. So next problem states that a rectangular notch has a discharge of 21.5 cubic meters per minute when the head of the water is half the length of the notch. Find the length of the notch, assume CD 0.6. अब इसमें क्या कह रहे हैं जी कि what find the length of the notch. B find करना है हमने. Q given है. A rectangular notch has a discharge of 21.5 cubic meters per minute. मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं. When the head of water is half the length of notch. अब ये क्या कह रहा है? Head of water क्या है जी? Half the length of notch, B by 2. So just write B by 2 in terms of H, I mean instead of H. Q का फार्मूला ये है, बाकी सारी चीजें गिवन है. H को हमने B by 2 कर लिया, B को एज इट इज रहने दिया. इक्वेशन को जस्ट सॉल्व करना, यू विल गेट दिस P. ठीक हो गया? Yes, sir. Okay, now next is the triangular notch. Just like a rectangular notch, it is very common. I mean, it is more common in practical field because it's very simple. I mean, it's very simple to find out the discharge from a triangular notch. Again, we are going to find its formula of discharge by considering a strip of thickness dh, and the height of water above this strip is small h, and the total height is h. One thing, another factor here is the angle of the notch. Okay, so how much is the angle? It can be 90, it can be 45, it can be 30, etc. So the discharge will include factor theta as well. Okay, in the last rectangular notch, I said that the width remain constant. Width of the notch remains constant, but here in this case, this width B is changing with the height h. Agree करते हैं? Yes, sir. जी Height सर. अगर h कम होगी तो B भी कम हो जाएगा. H ज्यादा होगा तो B भी ज्यादा होगा. So in this, B is a function of h. So we cannot, I mean, write a constant value against this B. So we would transform this B in terms of h. If we know the theta, if we know the value of theta, as the theta will remain same of any particular notch. So just divide it into a right angle triangle.
This becomes B by 2. This becomes H. This becomes theta by 2. So can you find a value of B from this triangle? Yes, sir. So just write tan theta by 2 is equal to B by 2 divided by H. B by 2 divided by H. Okay. Yes, sir. And from that B you can find, I mean from that equation you can find 2H. मैं direct लिख रहा हूँ. 2H times tan theta by 2. Okay. So from that you can find this B. The rest of the things are all same. You just write the formula of dq. यहाँ तक समझ आ गया? 2h, which is the width of the notch. After that, क्या कह रहे हैं? एक दफा इसको देख लेते हैं कि let h be the height theta cd. From the geometry of the figure we can find the width b of the notch as that the water surface is 2h. Okay, so just like we have found this this is at the top surface. Okay, so but while we are considering the strip, so we need to find the width of the strip. Okay, so the width of the strip is same as that h minus h. So this is h, this is total b. Then ये height क्या हो जाएगी? h minus h. So अगर हमने इस स्ट्रिप की width फाइंड करनी है तो हमें h minus h यूज करना पड़ेगा. Any question? Any confusion? सर ये पॉइंट रिपीट कर दें सर. सर ये पॉइंट रिपीट कर दें. जब मैंने अभी आपको कहा था कि हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द विड्थ, वी यूज टोटल h. ऐसे ही किया था ना हमने. यस सर, टोटल h जब से हमने मैंने b कहा फाइंड. है कि अगर स्ट्रिप की विड्थ फाइंड करनी है तो ये हाइट हमें पता होनी चाहिए ना. यस सर. तो ये हाइट कैसे आएगी? टोटल h माइनस स्मॉल h. यस सर. सो बाकी उसी तरह है. जस्ट लाइक ये आप ट्रायंगल बनाएंगे, सो ये हाइट हो जाएगी h माइनस h. सो दिस इज से b by 2 theta by 2. ओके सर. So the width of the strip is 2h minus h tan theta by 2, and area of the strip we just multiply with the width b times h. Theoretical velocity again. बाकी सारी चीजें उसी के. So total discharge find करने के लिए लिमिट्स लगे 0 से h तक और उसको सॉल्व कर लिया. जस्ट इसमें इंटीग्रेशन, इट्स वेरी सिंपल. ये पार्ट है इंटीग्रेशन का. और वो इसी तरह आपको पता है कि x square divided by 2 किया. So final formula for triangular notch is 8 by 15 CD under root 2g tan theta by 2 times h 5 by 2. So if all the things are constant, say for one notch theta would remain same. CD is 0.6 and G is again 9.81. All the things are constant here. So just by putting these all values in the formula of Q, so you have a reduced form of Q, which is 1.417 h power 3 by 2. Okay. So this is the reduced form of the notch in which you just need to find h. What are the advantages of a triangular notch over a rectangle notch? Only one reading, which is head h, is required to be taken for measurement of discharge in a given triangular notch. If in a triangular notch the angle of the notch, that is theta, is 90, the formula becomes very simple, that is Q is equal to 1.417 h 5 by 3. The triangular notch gives more accurate results for a lower discharges than a rectangular notch.
The same triangular notch can measure a wide range of flows accurately. So very simple examples of these triangular notches. A right angled V notch was used to measure the discharge of the centrifugal pump. If the depth of water at V notch is 200 millimeter, calculate the discharge over the notch in liters per minute. A right angled V notch. Right angle means theta is 90. ठीक हो गया जी. So tan theta by 2 क्या हो जाएगा? Theta by 2 45 होगा. एक्सक्यूज मी सर. जी बच्चे. सर ये नॉच जो है ड्रॉ कर दे काइंडली. ये 90 डिग्री वाली नॉच नॉच ड्रॉ कर सर. दूं. यस सर, जिस तरह क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया हुआ था सर आपने पिछला. नहीं, वो 90 डिग्री मींस ये इन दोनों के दरमियान एंगल 90 होगा. सर वो तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी फिर एक. तो ये नॉच है ना, ये नॉच है. सॉरी. ये एंगल 90 होना चाहिए. ये 90 है. ओके. ठीक है. राइट एंगल वी नॉच. वी ओके बन रहा है. सर. वी के दरमियान एंगल 90 है. ओके सर. A right angled V notch was used to measure the discharge of the centrifugal pump if the depth of the water at V notch is 200 millimeter. अगर ये H जो है आपका 200 millimeter है. Calculate the discharge of the notch. Assume coefficient. Simple फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है. थीटा आपको पता 90 है. H 200 है. CD 0.62 है. सॉल्व हो सकता है. सर ये तो सिंपल से भी सॉल्व हो सकता है सर, आपने इतना लंबा क्यों किया है? कैसे सिंपल से सॉल्व हो सकता है? सर थीटा 90 डिग्री है और सी डी 0.6 है, तो 1.47 सर एच 3/2 से भी हो सकता है सर ये. हो सकता है, लेकिन पहली दफा बिल्कुल सिंपल नहीं करना चाहिए ना. अगर कहीं यहाँ का अभी एंगल अगर चेंज हो जाए तो वही फार्मूला आप यूज कर दो तो फिर क्या करेंगे? अगर यहाँ लिखा होता कि एन ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल हैविंग एन एंगल दिस थिंग, तो फिर फिर तो सर मेन फार्मूला करना होगा. हाँ, तो मेन फार्मूला याद रखें. अगर तो 90 है तो आई वुड रिकमेंड टू रिमेम्बर दिस फार्मूला. ओके सर. ठीक है. जस्ट लाइक ओके. आगे हम देखेंगे कि एंगल में भी किसी में चेंज है शायद. So another problem during an experiment in a laboratory, 280 liters of water flowing over a right angle notch was selected in 1 minute. Discharge is given. Angle is again given. Right angle है. If the head of the cell is 100 millimeter, calculate the coefficient. CD find करना है इसमें से. हो सकता है. यस सर. Okay, मैं आगे मूव कर रहा हूँ. A rectangular channel which is 1.5 meter wide is used to carry 0.2 cubic meter of water. The rate of the flow is measured by placing a V-notch weir. If the maximum depth of the water is not to exceed 1.2 meters, find the position of apex of the notch on the bed of the channel. Okay, ये थोड़ा सा change problem है. A rectangular channel 1.5 meter wide. And अब एक से नॉच है. A rectangular channel 1.5 meter wide is used to carry a discharge of 0.2 cubic meters of water. Okay. The rate of the flow is measured by placing a V-notch weir. अब इसमें क्या किया हमने? एक V-notch लगाई है.
if the maximum depth of water is not to exceed 1.2 meters, means इसकी जो maximum depth है वो 1.2 meters है, इससे ज्यादा नहीं flow हो सकता. Find the position of apex of the notch. अब ये apex है, ये से हमने find करना है x. बात समझ आइए क्या find करना है? क्वेश्चन किसको समझ आ गया? यस सर, समझ आ गया सर. पार्ट समझ नहीं आया सर, ये रिपीट कर दें. समझ आ गया सर. मैं रिपीट कर रहा हूँ. एक रेक्टेंगुलर चैनल है जिसकी विड्थ 1.5 मीटर है और उसमें से पानी जो है वो 0.2 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है. ठीक है. Q is given. The rate of the flow is measured by placing a V notch. अब ये हमें कैसे पता चला? ये हमने V notch लगाई थी जिसका एंगल और CD हमें पता है. V notch, ये V notch है. से वाटर डेप्थ इधर है, ये सारा पानी इधर से फ्लो कर रहा है. If the maximum depth of water is not to exceed 1.2 meters, अब maximum height जो water की achieve है हो रही है वो 1.2 से ज्यादा नहीं है. Find the position of apex of the notch from the bed of the channel. अब हमने क्या find करना है कि notch की height from the bed of the channel, apex ये distance, ये find करना है. अब ये कैसे आएगा? जब if we are going to find h, which is the height of liquid flowing over the notch, and if you are able to find h, then the apex would be 1.2 minus h. It gives the height of apex. यस सर. समझ आ गया? यस सर. अब h बड़ा easy है find करना. By just putting all the values in the formula for triangle, you will be able to find this h, and once we have found h, माइनस कर देना है 1.2 से. जी. यस सर. Any question? नो सर. Any confusion or any question? नो सर. Okay. Water flows over a rectangular notch of 1 meter length over a depth of 150 millimeter. ये पहला पार्ट हो गया प्रॉब्लम का जी. वाटर फ्लोज ओवर रेक्टेंगुलर नॉच ऑफ 1 मीटर लेंथ. इसमें बी क्या है जी? 1 मीटर. 1 मीटर. ये मेरे 1 मीटर है या 1.5, इसको रिप्लेस कर लीजिएगा. ठीक है, 1 से. ओके सर. डेप्थ गिवन है h 150 millimeter. The same quantity of water passes through a triangular right angle notch. Find the depth of the water through that notch. Second part क्या है? पहले पानी जो है वो रेक्टेंगल नॉच से गुजर रहा है. कुछ देर बाद सेम क्वांटिटी वाटर इज पासिंग थ्रू ट्रायंगुलर नॉच, और इस ट्रायंगुलर नॉच की हमने h फाइंड करना है. ठीक हो गया? h फाइंड करने Yes, के sir. लिए क्यू पता होना चाहिए इसका. यस सर. क्यू फाइंड और करेंगे. Q हम फाइंड कर रहे हैं पहले पार्ट से, विच इज रेक्टेंगुलर नॉच. इसमें हमें Yes, B भी sir. पता है, H भी पता है, CD दोनों के गिवन है, ऑफ रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल एज वेल. ठीक हो गया? सो फर्स्ट यू विल फाइंड द डिस्चार्ज over a rectangular notch, which is this one, and by using this discharge you can find H. यस सर. So the last part of these types of notches is the discharge over a trapezoidal notch. Trapezoidal shape पता है आपको क्या होती है? Okay, the important thing, इसमें कोई नई चीज नहीं है. अगर आप गौर से देखें
ट्रेपेजॉइडल में एक आपकी रेक्टेंगल नॉच बन रही है. आई मीन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन रेक्टेंगल एंड वन ट्रायंगल. अगर मैं ये पार्ट रेक्टेंगल बीच में से हटा दूं, से मैंने इसको अलग कर लिया, बाहर ले गया मैं, तो मेरे पास कौन से पार्ट बच गए? एक ये पार्ट बच गया, एक ये पार्ट बच गया. ऐसे ही है. यस सर, ट्रायंगल बन जाएगी. इसको मैंने कंबाइन कर दिया तो क्या बन गई? ट्रायंगल. जो हमने पहले एक पढ़ा था, इसका फार्मूला का हमें पता है, क्यू का. इस ट्रायंगल का भी हमें फार्मूला पता है. यस सर. So discharge over trapezoidal notch is a summation of discharge over one rectangle notch and one triangle notch. ये ठीक हो गया जी? The sum of discharges over rectangular and triangle notches. फार्मूला आप देखें, ये किसका फार्मूला था? ये रेक्टेंगल का फार्मूला था. और ये किसका फार्मूला था? ट्रायंगल का फार्मूला था. समझ आ गया? यस सर. इस प्रॉब्लम को देखें. A trapezoidal notch of 1.2 meter wide, total width ऊपर given है which is 1.2 meter wide, और bottom भी given है. Means rectangle notch की B तो हमें पता है which is 450 millimeter, and the bottom is 300 millimeter. Sorry, and the a trapezoidal notch of 1.2 meter wide at the top and 40 millimeter at the bottom is 300 millimeter high. Height of this notch is given. This is not the height of water, but this is the height of notch, which is 300. Okay. Find the discharge through the notch if the head of the water is 225 millimeters. So this is H. Take the coefficient of discharge is 0.6. For the rectangle notch, we have all the things. Height is also given, which is 225, and the width B is also given, which is 450. So rectangle notch के हमारे पास सारी चीजें हैं. But if you see the formula for triangle notch, so you do not have theta. Do you know what is theta? यस सर, नहीं है. Theta नहीं है हमारे पास, which is theta by 2 actually. So how can we find the theta? We know the dimensions of the notch. We know the dimensions of the notch. Say the height is 300 millimeter. ऐसा ही है. If this is theta by 2, so again we can find this height by just subtracting. If I say this is 1200, so 1200 minus 450, it is equal to, I mean, if this is B1 and B2, B1 plus B2, ऐसे ही होगा. यस सर. So now if we divide this by 2, so as both these B1 and B2 are same, so it will give वन आंसर. B1. ठीक हो गया जी. So ये भी हमें पता चल गया. एक्सक्यूज मी सर, सर ये जो सेम हाइट होंगे ना? जी सर जी पूछें. सर ये जो 300 आपने लिखा है यहाँ पे 2 to 5 नहीं आएगा सर इसकी हाइट ट्रायंगल की? बच्चे 2 to 5 तो वेरिएबल है ना. 2 to 5 तो वाटर डेप्थ है, वो वेरिएबल है. 2 to 5 नॉच की हाइट, एंगल तो नॉच का है ना. 2 to 5 के लिए फिर आपको डेप्थ भी 2 to 5 वाली चाहिए ना. आई मीन टू से कि आप 2 to 5 जो कह रहे हैं, सर ये एच है ना सर, ये हमें फाइंड करनी पड़ती है. नॉच की नहीं, ये वाटर लेवल. फाइंड करनी है ना. एज तो वेरिएबल है. ये वेरिएबल है एच.
ठीक है सर, ठीक है सर ये जो B1 और B2 की आपस में लेंथ इक्वल हो गई है सर? तो सब सर का लीक कर शायद गए हैं। सर की बैटरी डाउन हो गई शायद थी। हाँ बैटरी डाउन होगी लैपटॉप की। Okay, so, am I audible to you? Yes sir. Actually, Yes, my sir. laptop is out of charge, so there's no electricity here. So I had to move to some UPS point for charging. So we were discussing about this theta. Actually, against 225, we do not know the width. So how can we find this theta? आपको बात समझ आई है मैं क्या कह रहा हूँ? Against this. सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है अब आपकी। Sorry. I didn't share it. Against this 225 height, we do not have this width B. Do we have? If we have this width B, then we can find this theta. Okay. But however, in terms of 300, we can find the width of this notch, which is 1200 minus 450 divided by 2. समझ आई है? सर डिवाइड बाय 2 क्यों किया सर? डिवाइड बाय 2 इसलिए किए कि जब आपने सर ये दोनों इक्वल है आपस में? नॉच देखो, नॉच तो बराबर है ना? नहीं सर, ये जो दो ट्रायंगल्स बनेगी ये इक्वल होंगी आपस में, इनकी लेंथ इक्वल है ना, बराबर है। ओके सर।
अब ये देखो नॉच है ना, ट्रेपेजॉइडल नॉच है, तो ये सारी चीजें बराबर हैं, सिमेट्री है ना, यानी कि दिस इज द मिरर इमेज, इधर और इधर सेम है दोनों चीजें। ओके सर। 1200, ये 1200 है, माइनस 450 क्या आया, से दिस इज बी एंड दिस इज 750। ठीक हो गया। 1200 माइनस 450 इज इक्वल टू 2b आ गया। यस सर। यही होगा ना, तो यस b सर। फाइंड करने के लिए 2 पे डिवाइड कर दिया, तो ये b 375। 1200 माइनस 450 डिवाइडेड बाय 2, और थीटा 10 थीटा बाय 2। अब अगेन यहाँ पे जो फाइंड करेंगे, सो दिस इज थीटा बाय 2, ओके, इट इज नॉट ओनली द थीटा, it is theta by 2. So you just divide it by 300 as like this. So this is 300 and this is 1200 minus 450 divided by 2, and this is theta by 2. So tan theta by 2 has a direct value of 1.25. So now you need to add one rectangle and one triangle. So when you solve it, you will be able to find the exact discharge Q. Okay. Any question? नो सर। Okay, so this is all about the notches. So if you have, say, step notch, so we will not study about the step notch, but I would give some basic concept about step notch. Just like a trapezoidal notch, which is a combination of one rectangle and one triangle. So if you have a step notch can be like this as well, or it can be like this as well. टू So ट्रायंगल्स। if you see that this is a combination of one rectangle and one triangle again, and this is a combination of one rectangle and one rectangle. So depending Cool. on the height, so for this triangle we will consider this height h1, and again for rectangle h2. So just add the formula of all the, you can say, the substitute notches. ओके सर। Is it clear? यस सर। Okay, so this concludes our today's lecture of notches. I will सर upload this. जी, अपलोड कर दीजिए सर, ये अपलोड कर दीजिएगा। कर देता हूँ. So still we have 3 lectures, lecture 9, 10 and 11. So how many weeks are left? सर आज सर ये लेक्चर 13th लेक्चर था, 13 था। 14th वीक था। 13 था सर आज। 13 था ना, लेकिन ऑफिशियली तो मेरा ख्याल लास्ट वीक भी 14th वीक है क्लासेस 14th week है. Okay, so we will try to cover the next 3 lectures in probably 2 weeks. सर तो लेंथी चलो सर जी, लेंथी लेक्चर है, अगले लेक्चर लेंथी है या छोटे से है सर? लेक्चर 10 थोड़ा सा लेंथी है, ओके। लेकिन अगेन एक कंसेप्ट है, तीनों डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं. 10 पाई फ्लो का है, 9 सेम है, 9 और आज जो किया था वो ऑलमोस्ट सेम है. ओके सर। So अभी do you have 10 more minutes? Next यस last सर। one. नो सर, सर सीआर को पता होगा, अभी तक तो नहीं थी। Actually ये जो आपकी अब why it's not connecting. अटेंडेंस फिर मैं मैन्युअली लेता हूँ फिर, क्योंकि आई हैव टू fill this attendance in the e-portal.
So CD दोनों sections इधर ही है ना अभी? यस सर। Yes, sir. 03. Present, sir. 04. 7. 8. 7. Present, sir. 8. Present, sir. Okay. 11. Present, sir. 11 present है. Yes, sir. 11 present. 1 2. 1 5. 1 2 absent है. 1 5. 1 6. 1 9. 2 0. 2 3. प्रेजेंट सर। 2 4. 7. 2 8. 3 1. Present, sir. 3 1 present. Yes, sir. 3 2. 3 5. 3 6. Present, sir. 3 9. 4 0. Present, sir. 4 3. 4 4. 4 7. Present, 4 8. 4 7 present. Present, sir. 4 8. Present, sir. 4 7 भी है. Yes, sir. यस सर। 47 Okay. present। 5 1. 5 2. 5 5. 5 6. Present. 5 9. Yes, sir. 6 0. Present.